अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नअबुदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ला लहु व मन युज़लिल फला हादिया लहु नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्न मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद. The topic is very interesting, but before we begin, it is befitting कि हम शुरू करें with the last few days of a Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. उनकी हर नरेशन में देयर इज अ सब्जेक्ट, देयर इज हमारे लिए एक सबक है. तो इंशाल्लाह पहले मैं शुरू करता हूं उनके कुछ फ्यू नरेशन से, ऑफिस उनके जो लास्ट फ्यू डेज थे इस दुनिया में वो नरेशन से. तो पहले तो ये है कि वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र. अल्लाह सुब्हानहू व तआला वक्त पे कसम खाया है कि हम हर इंसान को कुछ लम्हे मिले हैं इस दुनिया में. तो हमारा काम है कि इस लम्हों को हम सही तरीके से यूज़ करें और वो वक्त को हम सही तरीके से अपने आखिरत के लिए इन्वेस्ट करें. सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा जो टाइम है हमारे लिए इट इज़ फिक्स्ड. हर एक का टाइम फिक्स्ड है और हमारे जो लास्ट मोमेंट्स है शुड बी द मोमेंट्स दैट आर आवर बेस्ट मोमेंट्स. जब हमारे पैगंबर साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे मिंबर पे इन हिज लास्ट मोमेंट्स, अगेन देयर कई स्टोरी, कई नरेशंस है. उसमें से एक नरेशन ये है कि वो कहते हैं कि एनीबडी जिसको भी मैं कुछ वो करता हूं वो सामने आए, या अगर कोई है जिसको मैंने मारा है वो सामने आए. मेरी पीठ है उनके लिए, और अगर किसी को मैं पैसे वो करता हूं वो सामने आए ताकि मैं किसी पे ना अपना खर्चा रखूं. तो जब ये बात हुई तो कोई सहाबी सामने नहीं आए, बट वो दोबारा रिपीट करते गए उसको. तो एक सहाबी ने कहा कि ओह मैसेंजर ऑफ अल्लाह, आप मुझे 3 दिनार वो करते हैं, बट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं सामने नहीं आऊंगा तो मुझ पर गुनाह होगा. तो प्रॉफिट ने उनको कहा कि चलो आपके 3 दिनार आपको दे दे रहा हूँ, तो आपका माफ. तो इसमें एक सबक ये है कि वी शुड मेक श्योर कि वी ओ नथिंग टू एनीबडी इन आवर लाइफ. हमारी मौत कब आती हमको नहीं पता. तो अगर हमारा किसी पे खर्चा है वो खर्चा हम राइट अवे दूर करें, और अगर हम खर्चा वो दूर नहीं कर सके, जो हमारे सबसे नज़दीक हैं, हमारे बच्चे हैं, वो उसको दूर करें, तो हम पे कोई खर्चा ना हो. अनास इब्न मलिक जो सबसे मतलब उनकी लाइफ थी टू सर्व आ प्रॉफिट. उन्होंने कहा कि जब पैगंबर मदीना आए थे, दैट वाज द बेस्ट डे ऑफ आवर लाइफ, ऑफ आवर ऑफ अस, एंड द डे ही लेफ्ट वाज द वर्स्ट डे ऑफ आवर लाइफ. आयशा रज़ियल्लाहु अन्हु के लास्ट मोमेंट्स वर वेरी स्पेशल. तो we all know कि she was the most beloved to our prophet after Khadija radhiyallahu anhu. So it was her house that he spent the last few days at. तो जब वो लास्ट डे थे तो वो उनका सर था आयशा रज़ियल्लाहु अन्हु के सीने पे, एंड उनके जो लास्ट फ्यू ब्रेथ थे वो थे उनके सीने पे. तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जब उनका उनका जब वो उठे उनके लास्ट फ्यू मोमेंट्स में, वो चाहते थे कि उनकी ब्रेथ अच्छी स्पेल हो, क्योंकि वो डर था कि जब वो अल्लाह से मिलेंगे उनकी उनके उनके मुंह से बदबू आएगी. तो उन्होंने कहा कि मेरा मिसवाक कहाँ है.
तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हु ने मिसवाक लिया, अपने मुंह में डाला, और वो मिसवाक रसूल को दिया। तो जब रसूल को दिया तो रसूल ने वो मिसवाक लिया एंड उन्होंने अपना दांत साफ किए, एंड वो अपने ही उस वक्त पे कुछ लफ्ज बोल रहे थे। तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि ये कि मतलब बाद में उनके हदीस के थ्रू है कि उन्होंने कहा कि उनसे सवाल हुआ था कि वुड ही लाइक टू कंटिन्यू इन दिस वर्ल्ड, या वुड ही लाइक टू कम टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो उन्होंने कहा कि आई वांट टू बी इन द हाईएस्ट कंपनी, अल रफीक अल आला। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि ही वांट्स टू मूव फॉरवर्ड। उस वक्त पे फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु ने बहुत रोया, तो शी क्राइड अ लॉट। तो ही टोल्ड फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु कि व्हाई आर यू क्राइंग, बिकॉज आज के बाद योर फादर विल नेवर बी इन पेन एनी मोर, ही इज गोइंग टू बी इन द बेस्ट ऑफ द कंपनी। तो ये पूरे नरेशंस है टू शो अस वन थिंग, दैट अगेन हमारी मौत हमें कब आएगी वी डू नॉट नो। This was a prophet. The prophets were had the option to either stay in this world or leave, but because they were the prophets, we do not know when we will die. We do not know at what moment we will die, but it is very important that we should keep Allah in the best of our thoughts. We should हम हमारा काम है कि हमारे अल्लाह को सबसे बेस्ट मोमेंट्स में रखें। मतलब ये कि अल्लाह हमारे गुनह माफ़ करने वाला है, अल्लाह सबसे मर्सी वाला है, अल्लाह हमारे गुनह माफ़ कर देगा। ये नहीं कि अल्लाह पनिश करने वाला है, नहीं। रिमेंबर अल्लाह इन हिज बेस्ट ऑफ मोमेंट्स। तो what happens in your last moments, right? So yeah, again I wanted to start with this few narrations of the hadith of the life of prophet. The question that हम ये पूछते हैं कि डू वी नो आर डेथ, हमारी डेथ कब आएगी? लोग कहते हैं कि अरे अगर इंसान नेक रहा तो उसको कई दिन पता चल जाता है उसकी मौत आ रही है, राइट? अगेन ये पूरा इट्स ऑल अ मिथ। कुरान में अल्लाह बताया है वमा तदरी नफ्सुन नफ्सुम्मा जतक सिबू गद, वमा तदरी नफ्सुम बी अर्जिन तमूत, नो सोल knows what it will earn for tomorrow, and no soul knows in what land it will die. तो कोई इंसान को पता नहीं वो कब मरने वाला है, कोई इंसान को पता नहीं उसकी आखिरत कैसे होने वाली है। बस इतना है कि कुछ इंसान हैं जो जिसका अल्लाह से रिश्ता इज वेरी पावरफुल। तो अगेन इफ अल्लाह विल्स ही में शो देम सम साइंस कि आपकी मौत आ रही है। अगेन ये कोई हदीस नहीं है, ये कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है, इट इज प्योरली ऑन योर कनेक्शन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि अगेन देयर स्टोरीज जहाँ पे एक इंसान को कुछ दिन पहले से पता चल गया था उसकी मौत आने वाली है एंड वो मौत आ गई। अगेन दिस इज अ मैटर ऑफ अनसीन। ये मैटर वो मैटर है जो हमारे समझ के बाहर है, ना हम उसके बारे में सोचना, ना उसके बारे में हम कॉन्template करना। बिकॉज द मोर वी कॉन्template ऑन दीज मैटर्स द मोर कंफ्यूज्ड वी गेट। तो अल्लाह बताया है कि जहाँ पे हमारा सोच एंड होता है वहां पे हम आगे ना जाए, बिकॉज ये मैटर ऑफ अनसीन है। नो वन ट्रूली नोज what's going to happen the day and the moments we die. But there are few hadiths, ऐसे कुछ नरेशंस है जो ट्रूली ऑथेंटिक है, जिससे हमें मालूम होता है कि वो मोमेंट्स क्या है। तो पहला नंबर ये है कि आर देयर एनी साइंस, कि कुछ साइंस है क्या? जैसे मैंने कहा कि कोई साइंस तो नहीं है, बट एक साइंस वो लोगों के लिए है जो आ, कोई डिजीज से गुजर रहे हैं, जिसको पता है कि उनके जो मोमेंट्स है आर लिमिटेड। कोई is with a disease which is going to kill them and they know that, वो डिजीज में वो एक साइन है। बट अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये बताया है कि जो हर मोमेंट जो आपकी तकलीफ होगी वो आपके लिए आपके गुनाहों की माफी है इस दुनिया में।
राइट? तो हर मोमेंट जो आप तड़पेंगे इस दुनिया में, द एगनीज ऑफ डेथ, वो हर एगनी आपकी सिंस की एक्सपायरेशन है। इससे एक हदीस है, ऐशर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, may Allah be blessed upon him, began to put his hand in water and wipe his face with it, saying, La ilaha illallah, there is no God but Allah. Verily, death has agonies. तो उन्होंने कहा कि मौत के इतने इतने मतलब देयर सो मेनी problems with death, as in so many things with death, कि it will hurt people, and her agony is going to be an expiation of your sins. तो आपका ये है कि जिसको पता है कि उनके कुछ लम्हे वो है, तो उनके ज़बान पे तहलील होना चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। बट हम जो ऐसे इंसान हैं जिसको पता नहीं कि हमारी मौत कब है, तो ये है कि हमारे लिए कि वी शुड ऑलवेज थिंक अल्लाह इन द पॉजिटिव, कि अल्लाह माफ़ करने वाला है, अल्लाह सबसे रहमान है, अल्लाह सबसे रहीम है, अल्लाह सबसे गफूर है। बिकॉज इफ अल्लाह इज वॉट वी मेंट वी थिंक ऑफ, अल्लाह ने कहा कि मैं वो हूं जो तुम मुझे समझते हो। अगर तुम समझते हो कि मैं जल्लाद हूं, मैं जल्लाद रहूंगा। तुम समझते हो कि मैं रहमान हूं, मैं रहमान रहूंगा। तो दैट इज अबाउट हाउ अल्लाह वांट्स यू टू थिंक ऑफ अल्लाह। तो थिंक ऑफ अल्लाह ऑलवेज इन द पॉजिटिव। ऑलवेज आप अपनी आखिरत के लिए दुआ करो, आप अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगो, एंड ये उम्मीद रखो कि अल्लाह आपको माफ़ कर देगा। वॉट हैपन्स टू यू व्हेन यू डाई, जो जो कुछ लम्हे हैं जिस जब आपकी मौत होती है। तो इमाम अहमद की नरेशन है, एंड ये वेरी फेमस नरेशन है जो काफ़ी ऑथेंटिक है। इट सेज, वेरीली व्हेन द बिलीविंग स्लेव इज अबाउट टू डिपार्ट दिस वर्ल्ड, जब एक बिलीविंग स्लेव दुनिया से डिपार्ट होता है एंड एंटर द हियर आफ्टर, देयर कम्स डाउन टू हिम एंजल्स फ्रॉम हेवन विद वाइट फेसेस, as if their faces are the sun. They bring with them one of the shrouds of paradise and some of the perfume of paradise. Now ये उनके लिए है जो जो नेक इंसान हो। They sit with him as far as the eyes can see. Then the angel of death, may Allah be pleased with him, comes to him and sits with his head and on his head and says, O pure soul, come out to the forgiveness and pleasure of Allah. इस पे एक रिवायत ये है कि जब एक इंसान की रूह कब्ज होती है, अगर वो इंसान नेक रहा तो लिटरली इट्स लाइक वाइन बीइंग पोर्ड इनटू अ वाटर, स्मूथली सोल निकल जाती है। लेकिन अगर आपकी सोल करप्ट है, गुनेगार है, तो इट इज लिटरली लाइक सिल्क बीइंग रिप्ड ऑफ थॉर्न्स। जो तकलीफ होती है, दैट इज अ तकलीफ दैट अ सोल विल फील जब इट्स बीइंग पुल्ड इन फ्रॉम द फीट। तो the soul, so now then the soul comes flowing out of the water, flowing from a cup. Then he takes the soul, but as soon as the angel of death takes the soul, the two angels जो बैठे थे आपके आपके बाजू, they come and grab it. They shroud the soul in the cloth of paradise with the musk, and they raise it up to the heavens. The sooner the right, then out it comes in the most fragrance of musk to be found on the earth. तो उससे इतनी खुशबू आएगी कि जो इस दुनिया में उतनी खुशबू नहीं है। Then they ascend with it, and they do not pass by any group of angels, but angels ask, who is this pure soul? And they reply, it is so and so, the son of so and so, using the best names by which he was known on the earth. तो वो इंसान जब मरता है, तो एज ही इज बीइंग लिफ्टेड अप इन द एयर, हर एंजल पूछता है ये कौन है, ये किसकी अच्छी सोल है। वो कहते हैं ये वगैरह वगैरह, सन ऑफ सो एंड सो, ये डॉटर ऑफ सो एंड सो। देन दे ब्रिंग इट टू द लोएस्ट ऑफ हेवंस एंड आस्क फॉर इट टू बी ओपन्ड। आप पहुंचे हैं हेवंस पे एंड गेट पे रुके हैं, तो पूछते हैं, गेट वाले से बोलते हैं डोर खोले। Those who are the high rank in each heaven accompany it until they approach the next heaven. तो वो heaven में जितने भी high ranked लोग हैं will accompany the soul to the next heaven.
until it reaches the seventh heaven. Then Allah subhanahu wa ta'ala, may Allah be glorified, says, the record of the book, record the book of my slave in Ilyun, the highest heaven, and take him back to the earth, for I created them from it, and I shall return them to it, and I shall take them out from it again. Then his soul is returned to his body, and then two angels come and set him up. तो होता क्या, तो आपकी मतलब आप इमेजिन करें कि आपकी सोल हैज रीच्ड द सेवन हेवन. अल्लाह सुब्हानहू व तआला says, this is the soul of a pure person, write his deeds in the seventh heaven in the book of Ilyun, and send him back down in the earth where he can rest. तो इससे ये रिवायत है कि जब इन तो this is a soul that is pure. Then there is another, there is the second part of the narration जो evil है, and उसकी भी narration है. Then they ascend with it, and they do not pass by any group of angels, but the angels ask, who is this evil soul? Then they reply, it is so and so, the son of so and so, using the worst names by which he was known on the earth. Then they bring it to the lowest heaven and ask for it to be opened, and it is not opened for him. The Messenger of Allah recited, for them the gates of heaven will not be opened, and they will not enter paradise until the camel goes through the eye of the needle. Then he says, Allah may be glorified, record the book of my slave in Sijjin, the lowest of hell, and cast him and throw the soul back into his body. That is the narration of a evil soul. So you have the narration of the pure soul and the narration of the evil soul, right? तो इसमें ये जाहिर होता है कि आपके जो moments है after death, that has been given to you, what happens, that is narrated, and we know what happens to a good soul, what happens to a bad soul. Then the question happens now what happens? There's a time frame between आपकी death and the grave. This is the time where the funeral is taking place, आपकी हुसूल हो रहा है आपका and all that. Again, इस book पे there is no narrations, इसके कोई, again this is a matter of the unseen, and we have to have the faith कि हमें ये faith होना है कि ये आप इस वक्त अलग दुनिया में चले गए, right? There are narrations जहाँ कहते हैं कि इस वक्त पे आपको लोग you are able to see your family. You're not. The dead person is not aware of what's happening. He's dead. He is no longer alive. He's dead. And he's no longer in this world. The realm is separate and it's unseen. And as a Muslim, as a believer, you have to have the understanding कि ये matter unseen है, ये हमारे समझ के बाहर है, ना इसके बारे में हम सोचें, ना इसके बारे में हम बात करें. Now what happens after the grave? इसके again narrations है, authenticity है, and we know what happens at that moment, right? So पहला, आपकी आप जब बरी करते हैं आपको, 3 things that follow you. Number 1 is your family. Number 2 is your wealth. And number 3 are your deeds. आपकी family, आपका जो पैसा है, आपके जो deeds है, follow you to the grave. But 2 of them return back, that is the family and the wealth. What remains with you are your deeds. ये है, इसलिए हमारी कोशिश रहना चाहिए कि हम हर वक्त अपनी आखिरत के बारे में सोचते रहें. हम इस दुनिया में इतने मुब्तला हैं कि हम अपनी आखिरत के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं. यस, हम सोचते हैं, बट नॉट इनफ टू बी एबल टू गेन द रिवॉर्ड्स ऑफ द आखिरत. इस वक्त पे जब आप the last person from your grave walks away, the punishment comes to you. Again, this is the narration, तो मैं narration बोल रहा हूँ. The punishment comes to you from top. The prayer stands up as a human, as a man, and stops the punishment from the top. तो आपकी जो नमाजें हैं वो आपकी punishment रोकती है ऊपर से.
फिर punishment comes to you from the sides. फिर आपके जो सियाम है, आपके जो रोजे है, they stand up as a man and they stop the punishment from coming from the dead. And then the punishment tries to enter from the bottom. And आपकी जो charity है, आपकी जो good deeds है, they stand up and they protect you from the punishment. इस वक्त पे दो angels come to you and they wake you up. Munkar, Nakir. And they ask you 3 questions. And this is where the time of Barzakh begins. The 3 questions that they ask you is, who is your Lord? What is your religion? Who is your prophet? And the person will say, my Lord is, and this is for a believer, my Lord is Allah, my religion is Islam, and my prophet is Muhammad. There's a narration, Surah Ibrahim mein, ayat number 14 to 27. Yusabbitullahu allazina amanu bil qawl as-sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirati. Allah makes the believers steadfast with the firm words of faith in this worldly life and the hereafter. ये जो 3 questions है, ये हर मुसलमान आंसर करेगा. But the question that has to be done here is, how faithful are you to those words? How faithful were you to Allah subhanahu wa ta'ala in this life? क्या आप एक obedient servant थे या नहीं? क्या आप Islam, did you follow the religion as Allah subhanahu wa ta'ala and the Rasul sallallahu alaihi wasallam asked you? No. Yes or no? Did you follow the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the sunnahs that he gave prescribed? Yes or no? अगर आपकी नीयत, you did it with sincerity, उस वक्त पे अल्लाह से आवाज आएगी, this person is saying the truth. ये इंसान सही बोल रहा है, इस पे इसकी ग्रेव को एक्सपैंड करो, इसको जन्नत दिखाओ. और वो इंसान जो सिर्फ दिखावे के लिए, सिर्फ हाँ मुसलमान था लेकिन was not a true Muslim, उसके लिए again उसके लिए क्या है, we do not know. Allah subhanahu wa ta'ala will punish who he wills. So we do not know what will happen to the one who is not the true believer. True believer के लिए we have the hadith that says Allah will say, oh, ये इंसान was truly a Muslim, was truly my slave. So expand his grave so that he can see the Jannah with his eyes. उस वक्त पे वो इंसान बोलेगा, oh Allah subhanahu wa ta'ala, let the day of judgment come fast, ताकि I can meet my family and enjoy the rewards of paradise. तो और जो इंसान जिसकी जो नाम जो मुसलमान था, नाम मतलब was not a true believer, उस पे बरज़ख की जो खैर है वो शुरू होती है. Right? Now the punishments of grave are the true. The question that comes to ask, what about ones who have good deeds, a lot of good deeds, but some bad deeds? The answer for that is the punishment of grave does exist. So we do, and no insan truly knows what will happen of that person at that moment. But there are many narrations जहाँ पे the grave के punishments have been authenticatedly narrated by our Prophet with examples. So now one more part of the true believer is when the grave expands, a very handsome looking man comes in his company. A man जो इतना handsome है कि no human being can imagine the beauty of this man. And that man, to this person who is dead, will ask, who are you? And the man will say, I am your good deeds. I am the deeds that you did in this world. I am the Quran that you read. I am the prayers that you prayed for Allah subhanahu wa ta'ala. I am the charity that you gave for Allah subhanahu wa ta'ala. I am the
I am the deeds that you have done for your family. I am the deeds that you have done for your parents, for your children, for your siblings, and so forth. I am the deeds. And as per narrations, वो इंसान की इतनी खूबसूरती रहेंगी कि आप कि इस दुनिया में कोई बयान नहीं कर सकते कि वो आदमी इज बेसिकली द ब्यूटिफिकेशन ऑफ योर डीड्स एंड वो आदमी आपके साथ खबर में रहेगा to accompany you till the day of judgment. Right? Now, for the munafiqeen, for the munafiqun and the kafir, that is the hypocrites and the non-believers, there is punishment. And Allah subhanahu wa ta'ala, there is a narrations, ये है कि the one who is not a true believer, जो evil soul है, जो ये तीन questions आंसर करेगा और अल्लाह बोलेगा नहीं, ये इंसान झूठ कह रहा है, इसके लिए उसका ग्रेव को कंस्ट्रिक्ट करो, मेक इट टाइट, ताकि he feels the pain. And उस वक्त पे there's a narration that 70 dragons, 100 dragons will be, he'll see 100 dragons. Matlab, her dragon will have 7 faces of a snake, looking to bite him and strike him. That's the hadith that talks about how severe the punishment is for the one who is not true to Allah subhanahu wa ta'ala. I don't want to scare people here, so I don't want to talk about that part right now. I want to talk about the good parts. So now there are some narrations about the grave and the punishments. So the narration ये है कि one time one of he was walking by 2 graves. One of them would carry tails, causing, so he saw 2 graves, and he said, one of them would carry tails, causing discord and enmity. Matlab, he used to give false statements about people. And the other one would be careless from splashing himself with urinating. Matlab, he was not clean. The Prophet said, he took a date palm, he took a date leaf, and he spit on the date leaf, and he put the date leaf on the grave. He said, I hope that their punishment might be lessened till these branches become dry. Matlab, the punishment was so severe that wo date palm ke trees would reduce the punishment that they're going through. For 2 people, one who spread false points about people, other one who does not keep himself clean. Then a hadith hai through Abu Dawood that says he went out with the Messenger of Allah accompanying the funeral of a man of Ansar. When he reached his grave, it was not yet dug. The Messenger of Allah subhanahu wa ta'ala sat down, and we all sat down around him. We were still as if the birds were over our heads. He had in his hand a stick with which he was scratching the ground. He then raised his head and said, Asta'izu billahi min azabil khabar. Seek refuge from Allah's punishment in the grave. So the punishments of the grave are true, and the punishments of the grave are in this order. Pehla hai spreading false statements about people. Number 2, again, the order mein nahi hai, I'm just giving them out. Number 2, being in a state of impurity. Number 3, ghibat and lying, and tans, किसी पे तंज करना, किसी पे तोहमत लगाना, गीबत, रियाकारी, lying. Next, forsaking the Quran after having learnt it. Sleeping and missing an obligatory prayer. आप कुरान पढ़े लेकिन कुरान को पढ़ के भूल गए. वो इंसान जो नमाजें जानबूझ के मिस करता है. Next, consuming and having debt. जो पहले पॉइंट बोला था आपको, debt. Debt is a very important factor that comes into play here. There is a very powerful narration that in his last moments, Salatu Wassalam,
woke up from his sleep. He used to, मतलब वो उनकी, he was totally weak. He had high fever. So he would faint and he would get up. So he suddenly woke up and he said, "Oh Aisha, हमारे पास घर में कितने पैसे हैं?" तो आयशा ने कहा कि वी हैव टोटल ऑफ 7 dinars. तो उन्होंने कहा कि मैं, हाउ विल आई फेस अल्लाह सुब्हानहू व तआला knowing that I have 7 dinars in my pocket? Please give it away. I do not want any of it. And then again, he dozed off into his sleep. Again, he woke up. He said, "Oh Aisha, have you given the 7 dinars away?" So Aisha said, "Oh Prophet of Allah, I promise you that I will give it away as soon as I can." He said, "Please do it immediately." And he kept saying this until Aisha says, "Ki I gave away everything I had in my house." He, Sallallahu passed away penniless because he feared that the debt that he had, the money that he has, he's going to be questioned for that. So it is very important that we are cognizant. It's very important that we understand debt is a very important point, and we, हमारी कोशिश रहना चाहिए कि हमें डेट को अपने जिंदगी से निकाल दें. Next is zina. Zina is of multiple levels. Zina, we always think of fornication. That is the extreme form of zina. But zina can also be zina of your eyes, zina of your hands, zina of your mouth, zina of whatever your ears. So stay away, because Allah बोलता है, Allah doesn't say zina mat karo. Allah कहता है don't go near zina. Do not do things that can take you towards zina. Allah has never said don't do zina. Quran में Allah has very clearly said do not go near zina. मतलब ये कि अपने आँखों को आप हमेशा कंट्रोल करें, अपनी ज़बान को हमेशा कंट्रोल करें, अपने हाथों को आप हमेशा कंट्रोल करें. These are all forms of zina. Again, what punishment it is beyond our understanding, beyond our comprehension. So all we know is zina का punishment है. Then enjoining righteousness upon others and forgetting oneself. मतलब ये उनके लिए है जो इस्लाम को फैला रहे हैं, जो बोलते हैं ये करो वो करो, लेकिन वो खुद नहीं करते हैं, तो उनके लिए है. Then next is the one who breaks his fast in Ramadan with no excuse. मतलब बगैर कुछ रीजन के वो अपनी रोजे या अपने सियाम को तोड़ देता है. And the one who drags one's garment out of pride. मतलब जिसको pride और ego है. इसके punishments are very severe. Again, I do not want to talk about the punishments in this point, in this topic, but it is very important कि all these मैं जो points बता रहा हूँ, ये सबके punishments have been authenticatedly narrated. So the question is there punishment? Yes, there is punishment. There is three, basically you can break it down into 3 stages. The stage before you die, the moment before you die. There's a saying, it says, said, okay, again, this is purely based on your connection with Allah subhanahu wa ta'ala. जहाँ पे आपके जो कुछ मोमेंट्स रहते हैं, लिटरली अ फ्यू मिली सेकेंड्स, जब आपकी मौत आती है, उस वक्त द एंजल ऑफ डेथ इज विजिबल टू यू. अगेन दैट इज प्योरली बिटवीन योर कनेक्शन विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला. इसलिए यू सी कि पीपल डाई विद देयर आईज लुकिंग अप, बिकॉज एंजल ऑफ डेथ कम्स फ्रॉम द टॉप. So you're looking at him and your soul has been taken. तो वो मोमेंट है. तो अगेन ये उनके लिए है जो कनेक्शन अल्लाह सुब्हानहू व तआला से है. And we do not know what is in this person's heart. That is again of unseen. And we say, you know what, ये person की डेथ हुई, he was, चेहरे पे मुस्कुराहट थी. ये इंसान की मौत हुई जब हम गुस्ल दे रहे थे उसको, वो इंसान की उससे खुशबू आ रही थी. अगेन ये पूरे मैटर्स ऑफ connection between Allah subhanahu wa ta'ala and the person, right? These are all small minor signs. No truly one can say
कि this person is jannati or this person is going to be safe from the punishment of the barzakh. तो prophets की हमेशा ये थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें कि हमें बरज़ख के पनिशमेंट से बचाए, बरज़ख के अजाब से बचाए, because that is one thing that truly does exist. Second point, another point that comes is, what about, is it body or soul? The question is, it is both. Because the soul, the body feels the punishment. The body feels the pain. There's a punishment that has been said for the person who is a liar, the person who is spreading false. His face, his lips, his mouth is cut and stretched to a point where it basically is ripped. And again, he comes back together. That is for a person who spreads false hopes. And that pain is felt by both the soul and the body. ये आता है कि एक पॉइंट ये रेज हुआ कि भाई अगर इंसान को हम डिग करें ग्रेव से, दे decay after a month, so what happens? So the question, the answer is, the realm of the hereafter, the barzakh, is beyond our understanding. It is a different realm altogether. वो अलग ही दुनिया है. तो ये है कि जो बोलते हैं ना कि अगर नेक इंसान रहा तो वो वक्त जो है उसका खबर में कुछ घंटों के जैसा रहेगा, या अगर वो इंसान बद रहा तो उसकी जो खबर में टाइम रहेगा विल बी लाइक ईयर्स. ये हमको पता रखना चाहिए कि जो टाइम इन द हियर आफ्टर इज नॉट द सेम एज टाइम इन दिस वर्ल्ड. इट्स रिलेटिव. कुछ लम्हे in the hereafter could be years and years in this world, right? So it is relative to time in this, in that. So when Allah says it is few ghante, it is relative to the few ghante of the akhirah. It could be years and years in this world. Again, it is beyond our understanding. So do not go to a point where you are confused, because that is the way shaitan confuses you. Shaitan puts doubts in your mind to find out more and more. And the more and more you get confused, the more and more आपकी ईमान starts to weaken. So it is very important कि आप ये points को अल्लाह पे छोड़ दें. ये है कि अपनी आखिरत, अपने नेकियों को आप बढ़ाएं, अल्लाह से माफी मांगें कि अल्लाह हमें बरज़ख के अजाब से बचाए. Right? And one very big question that हमसे पूछा जाएगा is about time. जो मैं शुरू किया था टॉपिक टाइम से, वो टाइम इज ऑफ एसेंस टू अस. हमारे को टाइम पे क्वेश्चन होगा, हाउ डिड वी यूटिलाइज आवर टाइम? डिड वी यूज आवर टाइम फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, या डिड वी यूज अ टाइम टू gain the benefits of this world? So that is one question. So it is very important कि हर इंसान अपने वक्त का अंदाजा रखे, हर इंसान अपने वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल करे, ताकि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जब सवाल जवाब होगा तो आपके पास एक आंसर होगा जो अल्लाह को बता सके. तो ये है the point. So again, I want to make 3 points very clear. There is narrations that talk about the moments after the मौत होती है, the moments when the angel of death comes to you and the 2 angels, they come to you and they take your soul up to the skies. That's one moment. The second moment is when the last person leaves the grave and you are being, and आपकी question and answer शुरू होता है, and from there to the day of judgment is your barzakh. And that is the time where the punishments of grave come into play. If you are of good, the punishments could be less if Allah wills. If Allah wills, there could be no punishments for you. Again, that is purely of the unseen and of Allah's will. So it is our dua कि अल्लाह हमारे को बरज़ख की आग से हमेशा बचाए. और एक पावरफुल दुआ है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे अपने सहाबियों के लिए on their thing,
ये है, ओ अल्लाह, forgive so and so and raise his level among the rightly guided. इसका अरबिक वर्जन मैं आपको भेजता हूँ. And let his remaining offsprings be like him. Forgive us and forgive him, O Lord of the worlds, and expand his grave and eliminate it for him. ये दुआ, स्पेशली आप जा रहे हैं किसी की ग्रेव पे, ये दुआ की बड़ी फजीलत है. तो ये दुआ की मेमोराइज करें ताकि यू कैन रीड दिस दुआ एट ऑल टाइम्स. और एक दुआ, देयर मेनी दुआज इन कुरान, वी ऑल नो दुआज जो अपने आखिरत के लिए है, बरज़ख के लिए है. हर वक्त पे ये दुआ मांगे कि अल्लाह हमें बरज़ख की आग से, तब के पनिशमेंट बचाए. द पनिशमेंट बरज़ख आर ट्रू एंड आर वेरी सिवियर. May Allah keep us away from the punishment of the grave. And ये दुआ है, अस्तईज़ु बिल्लाहि min azabil qabr. Seek refuge from Allah from the punishment in the grave. हर नमाज के बाद ये दुआ पढ़े तो it will be helpful for all of us. So again, this is what I wanted to cover in this narration. We have some time left. So hopefully it was of help. It was some new information that I was able to provide all of you. I'll open the session for Q&A or some points if somebody wants to add.